Now student, budget receipt has two part, that is the revenue receipts and another is capital receipts. तो अभी तक आपने revenue receipts के बारे में पढ़ा. Now next is capital receipts. Capital receipts किसे कहते हैं? तो capital receipts क्या है? Capital receipts means capital receipts are those receipts which either creates a liability or cause reduction in assets of the government. So what is capital receipts? Capital receipts किसे कहते हैं? Capital receipts क्या है? Capital receipts are those receipts which either creates a liability. कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है गवर्नमेंट को, दैट इज जनरेट फ्रॉम द कैपिटल एस्पेक्ट्स विच शोज द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, विच क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इससे असेट्स भी रिड्यूस होते हैं, गवर्नमेंट्स की प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है और लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स. एंड कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आता है इसमें बोरोइंग्स, देन नेक्स्ट इज recovery of loan, and then other receipts. So capital receipts क्या है? Capital receipts are those receipts which creates a liability of the government, जिससे कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है और उससे गवर्नमेंट के असेट्स भी रिड्यूस होते हैं. अब इसके पार्ट्स हैं आपका बोरोइंग्स, then recovery of loan and other receipts. Borrowings, when the central government is paying or giving borrowings to any of the government, or either he will take the borrowings, so it will creates a liability of the government. अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी से बोरो करती है, पैसा अगर बोरो करती है, तो उससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या होती है? ये रिसिप्ट से, बोरिंग्स से पैसा तो मिलेगा, लेकिन इससे इट विल क्रिएट्स द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होगी. एंड नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन. अगर गवर्नमेंट किसी से लोन, अगर सपोज गवर्नमेंट हैज गिवन सम लोन टू एनी ऑफ द पर्सन, so that loan will be recovered by the government, so it will decrease the assets of the government. इससे गवर्नमेंट का assets कम होगा, it will reduce the assets of the government. And other receipts, अदर receipts का मतलब जस्ट लाइक गवर्नमेंट की दूसरी सोर्सेज से जो पैसा तो मिल रहा है, बट उससे गवर्नमेंट की जो है वो असेट्स कम हो रहे हैं, जस्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट इट इज कमिंग इन अदर रिसिप्ट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हमारे देश में, हमारे कंट्री में पहले से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, मीन्स बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सिर्फ जितना भी प्रोडक्शन था दैट इज कम्स इन टू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ओनली. गवर्नमेंट इज डूइंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज, very few private sector industries are there, or there will be no private sector industries are there. But after the means introduction of new economic policy, जब LPG introduced हुआ, that is liberalization and privatization, so many new industries came by the private sector. So then that is the time for the government, that when the government is having some loss making enterprises, government की कुछ जो public sector undertakings जो कि loss में चल रही थी, so that enterprise government has sell to private sector, so that they can take over or they can purchase these loss making enterprises, and they can run, and they have their huge funds, and वो उसको और अच्छे से चला सकती थी. तो जब गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को डिसइन्वेस्टमेंट किया, दैट इज सेलिंग हिज इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर, देन इट विल रिड्यूस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की इससे असेट्स कम हो गए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम हो गई, डेफिनेटली इससे गवर्नमेंट का पैसा तो मिलेगा, रिसिप्ट्स तो होगी, बट इट विल रिड्यूस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो इट इज कमिंग इन द कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जिससे कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, एज वेल एज गवर्नमेंट के असेट्स भी रिड्यूस होते हैं. सो दिस इज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स. पहला है बोरोइंग्स. बोरोइंग्स विल क्रिएट्स द लाइबिलिटी.
रिकवरी ऑफ लोन, इससे गवर्नमेंट के एसेट्स कम होंगे, एंड अदर रिसिट्स यू नो दैट इज ऑल्सो डिक्रीजेज द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. So these are the capital receipts of the government. So this is the budget receipts. Budget receipt means that is revenue receipts and capital receipts. So I think you can understand the first part of the government budget, that is budget receipts. Budget receipt means revenue receipt as well as capital receipts.